Let us quickly look at this problem. So this problem asks about finding out shear stress distribution diagram, right? And where the shear stress distribution diagram has to be found out for a simply supported beam of this particular dimension, right? So first what we'll do is हम लोग पहले जो बीम दिया है बीम को ड्रॉ कर लेंगे और उसके ऊपर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो है 5 मीटर का वो दे देंगे एंड देन विल सी अलाउएबल बेंडिंग स्ट्रेस कितना दिया है, बाकी का चीज देख लेंगे. The first thing is we'll look at the beam. So beam का dimension जो दिया है 200 wide and 500 depth. ठीक है. So if you look at that एक simple diagram बनेगा. So it will be a rectangular beam जिसका ये cross section रहेगा. So this will be 500 and this will be 200. And over to that what is given? So it's a simply supported beam with certain span of 5 meter and इसके ऊपर there has to be certain loading जिसका value that will have to work out. ठीक है. And then उसके बाद we'll have to work out with the shear stress distribution diagram. So the first question is to find out the value of W, right? So क्या करते हैं सबसे पहले ना, let us try to see कि how we can work out with the value of W first and then we'll go ahead. Now अगर इसको मैं A बोलूँ इसको B बोलूँ तो obviously यहाँ पे this will be RA, this will be RB. Hmm? Now what we have to do is we have to find out the value of W first एंड देन बाकी का वर्कआउट कर लेंगे. ठीक. चलो. नाउ व्हाट विल डू इज फर्स्ट. अच्छा. फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज फर्स्ट आउट फाइंड आउट वैल्यू ऑफ डब्ल्यू आर ए. सो आर ए विल बी इक्वल टू डब्ल्यू बाई टू एंड दिस विल बी डब्ल्यू बाई टू. कैसे आया? बिकॉज व्हाट विल बी द टोटल लोड विल बी डब्ल्यू एंड इट विल बी शेयर्ड, राइट? एज द लोड विल बी शेयर्ड दिस विल बी डब्ल्यू एल बाई टू, डब्ल्यू एल बाई टू. ठीक है. सो लोड हाफ ऑफ हो जाएगा ना. यूडीएल जो होता है उसका इंटेंसिटी कितना आता है? W इंटू एल. दैट इज अ लोड इंटेंसिटी इफ दिस इज एल एज टेकन. ठीक. तो ये आएगा WL/2 WL/2. ओके. नाउ इसके बाद क्या करना है हमें? सो दिस इज द वैल्यू ऑफ WL, RA एंड RB. ठीक है. नाउ वाइल कैलकुलेटिंग shear stress distribution diagram हमको W का वैल्यू चाहिए होगा ना. बट यहाँ पे what we have to do is we have to first find out कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट. तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग? तो इसके लिए इसका जो डायग्राम आएगा वो डायग्राम कैसे आएगा? अभी इसका अगर मुझे शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाना है तो हाउ द शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम विल बी? इट विल बी लाइक दिस, राइट? ठीक है. और इसका बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसे आएगा? बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम विल बी यहाँ पे सेंटर से इट विल बी हैविंग द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट. ठीक है. यहाँ पे. ओके. So how do you find out the shear stress? We find out the shear stress at A left, we find out the shear stress at A to the right, and then we'll go to the shear stress at B again left, and shear stress at B again right. ठीक है. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग? तो यहाँ पे कितना आएगा? जीरो आएगा, राइट? और यहाँ पे भी कितना आएगा? जीरो आएगा, राइट? हाउ मच विल बी दिस वैल्यू? इट विल बी ऑब्वियसली WL/2. ठीक है. हाउ मच विल बी दिस वैल्यू? इट विल बी WL/2 माइनस क्या आएगा? what it will be? WL, राइट? सो बाय डिफॉल्ट ये कितना है? ये हाफ है और ये वन है ना. तो इट विल बी WL/2 ओनली. ठीक है. एंड बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जीरो आना चाहिए. तो व्हाट विल बी द मैक्सिमम shear फोर्स? ये क्या है? shear फोर्स है, राइट? shear फोर्स. इफ यू लुक एट द वैल्यू, ये वैल्यू व्हाट इट विल बी? इट विल बी WL/2. So shear force here is WL/2, right? And what will be the maximum bending moment? How do you find out the bending moment? Let us call this point to be M. So bending moment at M कितना आएगा? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल बेंडिंग मोमेंट एट ए कितना आएगा? ए विल बी इक्वल टू जीरो. ऑब्वियसली यहाँ पे जीरो आएगा. देन बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी विल बी इक्वल टू ऑब्वियसली जीरो आएगा. सो वी हैव टू वर्क आउट बेंडिंग मोमेंट एट एम नाउ. ठीक है. सो बेंडिंग मोमेंट एट एम कितना आएगा? कैसे कहते हैं हम लोग? सो विल बी गोइंग लाइक दिस.
राइट। सो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे तो इट विल बी फर्स्ट कौन सा फोर्स है, सो WL/2 इनटू व्हाट इज द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आएगा। अज्यूम कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस L है फिलहाल के लिए, जो हम लोग जनरलाइज कर रहे हैं, तो उसके बाद हम लोग वैल्यू डाल देंगे। सो ये डिस्टेंस आएगा L/2 माइनस क्या आएगा, माइनस UDL का आएगा अभी, दिस UDL। सो इट विल बी W इंटू L/2 इज a intensity and where it will be acting L/2 का 2। ठीक है, तो ये क्या आएगा WL²/4, और ये भी क्या आएगा, ये जो है WL/2 ये L/4 हो जाएगा, एंड दिस विल बी WL/2 L/4, इट विल बी ओके, तो इट विल बी L²/8 ऐसा आएगा, राइट। एंड व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू नाउ, considering or combining this both, so bending moment at M will be equal to, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, सो इट विल बी 8, सो 2 और 1, तो इट विल बी WL²/8। ठीक, so this will be the final answer. Okay, so this will be the maximum bending moment if in case we may require this. Okay. Okay, so what we have obtained here, so for this case we obtained maximum shear force at WL/2, and bending moment maximum for this case would be WL²/8। These are the two quantity that we have got। ठीक है, now we'll carry forward with this things। ठीक है, so अभी क्या करना है, we'll have to work out with the values, right। Now we'll find out the maximum bending resistance। ठीक है, maximum bending resistance, why we are considering bending resistance, because the bending stress is given। ठीक है, how much it is, sigma b max, how much it is, 8 Newton per mm square, right। So as it is given, we'll have to use it now। What is the maximum bending moment, we know that sigma by y is equal to m by I। What we have to do is we have to find out the value of m। Why we need to find out the value of m, because in this also we got the value of m, right? So we can equate that and we'll get the value of w। So from here, what will be my m? So m will be equal to sigma I upon y। So what is a sigma, that we'll see. Now let us work out with these values. So what is a y? Sigma is I first we'll have to work out. So I will be BD cube by 12. So sigma into BD cube by 12 divided by, this will be d by 2। ठीक, so now the values we can put here,
So this 8 is there. Now we'll put this as B into D. So what is a B? B given as 200. So we'll keep it as 200. D is 500 cube. 12 will keep it down into D. D is how much? D is 500 again. And then 2 will go up here, right? So now what will happen? This will go, and यहाँ पे square आ जाएगा. So this is 2 into 8 into 200 into 500 का square divided by 12. So this is the value of M. Let us quickly work out the value of M. I'll put it in my calci. It is 2 into 8 into 200 into 500 का square divided by 12. So it is, in terms of engineering, the value is 66.67 into 10 raised to 6. Now let us equate this value. Therefore, M value will equate with the previous value, which is WL square by WL square by 8. Okay. Now this value would come while we are considering this value will be in Newton meter, right? So we'll have to convert it into Newton mm. So we'll multiply by 1000. So this will be 66.67 into 10 raised to 6 is equal to W into L is how much? L is 5 meter. So that will be square. Let us convert this rather than here. Let us convert this 500 into 5000 cos square divided by 8. Okay. So now we will get answer 10 raised to 6 into 8 divided by 5000 square. Okay. So the answer comes around W is equal to 37.79 into 10 raised to 6 Newton. Fine. So this is value of W, right? Then we'll find out the shear stress. So first is maximum shear stress. How much we got? Maximum shear stress. Shear force will work out shear force. So how much shear force we got? Shear force is equal to WL by 2. So W is 37.79 into 10 raised to 6. L is 5000 divided by 2. So shear force would be into 5000 divided by 2. So 37.79 into 10 raised to 6 divided by 2. Okay. So that shear force comes around 9.44 into 10 raised to 10 Newton somewhere. Okay. Now what we have to work out is we have to work out maximum shear stress. So maximum shear stress. So if you recall, tau max for rectangular section was given by this shear force, right? So 3 by 2 into 9.44 into 10 raised to 6 divided by B into D is 200 into 500. Okay. So this will be divided by 200 into 500. This will be multiplied to 1.5.
5. So tau max comes around 141 7.13 kilo Newton per meter square. And how would be the diagram? The diagram would be quite simple, like this. This will be the neutral axis, and this is how the diagram will go. Okay, so this value is 141,447.10 into 10 raised to 3. This will be 0. This will be also 0. So that's complete your answer.